Are you able to see the screen, Sana? Yes, ma'am. Okay. Okay, a quick review of what we have studied yesterday. Yesterday we studied about the living world and their characteristics and their defining and non-defining properties which are there in an organisms in the living world. Now we are going to study the diversity, means varieties of organisms which are present in the world. कई सारे तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में अर्थ पे, उसको आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे उसको डिवाइड करते हैं, कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं, कैसे उनका क्लासिफिकेशन होता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम. ठीक है, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे. ओके सना? यस मैम. शुड आई स्टार्ट? यस. ओके. टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी कि अभी अर्थ पे जितने भी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस डाइवर्सिटी क्या होती है. फर्स्ट इज अ टर्म डाइवर्सिटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी सना? Variety of organisms survive in environment. A variety of organisms, not variety of things. Variety of things. Variety of things. ठीक. बट जब इस डाइवर्सिटी पे हम लोग बायो लगा देंगे, बायो लगा देंगे अगर इस डाइवर्सिटी के आगे, तो ये मिलके हमारा क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिजम्स के बारे में. नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मींस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ये अर्थ के अंदर ही क्या है? बायोडाइवर्सिटी. वी कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी कैन सी ना. Yes ma'am. Yes. So Earth include a variety. What variety of every single organisms. मतलब कि आप एसिड्स में भी जाएंगे, एसिड एक इन्वायरमेंट में तो भी आपको एक ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा. एंड आप हायर ग्लेशियर्स एंड ठंडे एरिया में भी जाएंगे तो भी आपको वहाँ ऑर्गेनिजम्स रहने वाले मिल जाएंगे. मीन्स एवरी लिविंग काइंड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके. Yes ma'am. Now biodiversity में plant species and animal species. We in general count plant and animals. Plant species are 5 to 6 lakh species are there of plants, and animals at the same time near about 12 lakh species are there. This is rough estimation. Okay, near about 12 lakh species are there, and 1.7 to 1.8 million species are there which are yet to discover. This is just number. Species are yet to discover. Yet to discover. By this we can say कि अर्थ की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, मींस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स जितने भी हैं, उनमें से कितना? सिर्फ 5 से 6 लाख नॉन प्लांट्स हैं एंड 12 लाख नॉन एनिमल्स पाए जाते हैं. बाकी रेस्ट ऑफ दिस क्या है? इतने सारे मिलियन ऑफ स्पीशीज क्या है? अभी येट टू बी डिस्कवर्ड, मतलब कि अभी डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, जो कि ये अर्थ पे प्रेजेंट होंगे बट अभी कोई उन्हें खोज नहीं पाया है. ओके. अब यही सारे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, 5 से 6 लाख प्लांट या 12 लाख एनिमल्स, इन सब सारे एनिमल्स को एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन करना होगा, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना होगा. कैसे कोई एक प्लांट को पहचान लेता है या कोई पर्टिकुलर एनिमल को पहचान लेता है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म ये है. बाय सीइंग अ कैट आई वुड से क्या कि यस दिस इज अ कैट, बट मैं कैट को पहचान कैसे रही हूँ? उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना से ना. Yes ma'am. तो जो डिवीजन और कैटेगरी में हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उन सारी चीजों को टैक्सोनॉमी कहते हैं. क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या है? प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्लासिफिकेशन में दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग किया जाए, कैसे उसको क्लासिफाई किया जाए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी. एंड नाउ सिस्टमैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. मीन्स कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी करना एंड उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करना, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक्स. व्हाट वी कॉल देम? सिस्टमैटिक्स. इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया, फिर उनमें हम लोग क्या देखते हैं? रिलेशन देखते हैं, कंपैरेटिव रिलेशन देखते हैं एक प्लांट का एनिमल से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनमें क्या रिलेशन है. फिर उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं, मींस वो लोग कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, ये देखेंगे. सच एज एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमी एक्सेट्रा. मींस वहां उनकी केमिकल रिएक्शन से लेकर के उनकी पूरी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ तक में हम लोग सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ढूंढेंगे, जिससे हम लोग क्लासिफिकेशन में मदद मिल सके. इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक्स. मीन्स कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन अर्थ, उसको किस तरह से पढ़ा जाए और उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसे रिलेशन निकाला जाए बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज, देयर एनाटॉमी, देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. अंडरस्टूड? Yes ma'am. Okay. It is a broad term which include what?
क्लासिफिकेशन को भी इंक्लूड करता है, नॉमेनक्लेचर को भी, और टैक्सोनॉमिकल एड्स को भी, मींस कि इसमें क्लासिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसी में हम लोग सिस्टम ऑफ नेमिंग, नॉमेनक्लेचर मतलब क्या है, नेमिंग सिस्टम भी इम्प्लाई कर सकते हैं, और इसी में हम लोग टैक्सोनॉमिक एड मींस कैसे किसी चीज को पहचाना जाए वो भी इंक्लूड रहता है। दिस सिस्टम, द टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय हूम? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस वाज अ फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, एंड ही रोट अ बुक ऑल्सो, द बुक नेम आगे later we will study. Okay, the term systematics was given by Carolus Linnaeus. This is an important point, it can come in an exam of NEET. Okay, classification is done on the basis of external morphological characters. Now in the systematics what we do first, सबसे easiest way we follow that कि we classify based on external morphological characters. जो हमारे सामने आंखों से दिख रहा है, जो कैरेक्टर हम देख पा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग सिमिलैरिटी डिफरेंसेस निकालते हैं एंड वी क्लासिफाई बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स. न्यू वे वाज आल्सो इंक्लूडेड. सिस्टमैटिक्स का न्यू वे क्या आया था कि प्लस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ इंटरनल इन्वायरमेंट भी देखेंगे. इंटरनल कैरेक्टर्स मींस लाइक लीफ का वेनेशन कैसा है, लीफ का फोटोसिंथेसिस परफॉर्मेंस कैसा है, उसके अंदर क्या क्या और स्ट्रक्चर है, कैसे ग्रो कर रहा है. तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को जब हम कैरेक्टर मिला के किसी सिस्टम, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज नियो सिस्टमैटिक्स. नियो सिस्टमैटिक्स व्हाई? बिकॉज इट इज न्यू फॉर्म. ओल्ड सिस्टमैटिक्स क्या है? इट शोज, it sees only external morphological characters, but the neo-systematic sees both internal and external, and this neo-systematics was given by Sir Julian Huxley. Okay, this scientist names you have to remember because sometimes it may ask in objective type questions. Okay, objective type questions में ये सब आ सकते हैं. Okay Sana? Yes ma'am. Okay, now we come to our main point, taxonomy. Taxonomy is what? It is the principle and procedures that are followed in the process of classification. Means जितने भी हम लोग तरीके यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी. जैसे मीन्स अगर हम लोग को अपने ही पेन और पेंसिल में ही डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? एक कोई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे कि यस इसमें क्या है, ये लिखने वाला काम है, दोनों ही लिखने वाला काम है, बट इसमें लेड लगा हुआ है इसलिए ये पेंसिल है, और इसमें क्या है, इंक भरा हुआ है इसलिए ये पेन है. सो दीज आर रूल्स एंड प्रोसीजर्स. इसी टाइप के रूल्स एंड प्रोसीजर्स इसमें टैक्सोनॉमी में या प्लांट और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? टैक्सोनॉमी. डेफिनेशन पे वही चीज, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, तौर और तरीके जितने भी हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करने के लिए जितने भी हम लोग तौर तरीका यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्या? टैक्सोनॉमी. नाउ दिस टैक्सोनॉमी वर्ड इज आल्सो गिवन बाय whom? APD Candolle. This one is most important. Just mark it, most important, because it has been asked in NEET questions and it may ask in future also. The word taxonomy was given by APD Candolle. He wrote a book. What was his book name? Theories of Book by APD Candolle. Theories of Elementary de la Botany. This was the book of this was the name of his book, and इसका मतलब होता है Theory of Elementary Biology. Okay, APD Candolle has written a book जिसका नाम था Theory of Elementary de la Botany and Theory of Elementary Biology. इसको लोग in general बोलते हैं. In that book he proposed the word taxonomy. However, taxonomy word का बेसिक और अच्छे से यूज किसने किया? कैरोलस लीनियस ने किया. ब्रॉड टर्म में यूज कैरोलस लीनियस ने किया है, बट जो वर्ड कॉइंड हुआ था या प्रपोज हुआ था वो किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने. ओके, अब टैक्सोनॉमी इंक्लूड क्या क्या करता है? टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. हाउ? आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट? आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या कह सकते हैं सना? आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट? आइडेंटिफिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स की करेंगे. अ प्रोसेस बाय व्हिच वी आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिजम्स. ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोसेस बाय विच वी आइडेंटिफाई एनी ऑर्गेनिज्म. एंड सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन उसको असाइन भी तो करते हैं एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में. ठीक, आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड क्या? कि पहले किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानना, फिर पहचानने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को ये किसी पर्टिकुलर किस टैक्सोनॉमिक ग्रुप में वो रखा जाएगा, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. एक ऑर्गेनिज्म को पहचानना, फिर उस ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमिक ग्रुप में रखना. These two combinedly will be called as identification. It is a process by which we identify any organism and place them in a taxonomic category. जो taxonomic category रहेगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसमें हम लोग उसको क्या करेंगे? प्लेस करेंगे.
ओके Yes, sir. यस। आइडेंटिफिकेशन के बाद और क्या इंक्लूड करता है टैक्सोनॉमी? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सिंपली मींस नेमिंग। व्हाट कैन वी से? नेमिंग। नेमिंग ऑफ व्हाट? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को पहचानना, उनको नाम देना, ये क्या कहलाता है? नॉमेनक्लेचर। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नाउ थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन। नाउ अब क्या, हमने एक ऑर्गेनिज्म को पहचाना, उसको नाम दे दिया, अब उसको क्लासिफाई करना मींस कि एक ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखा जाए और किस कन्वीनियंट कैटेगरी में रखा जाए, उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको किसमें लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। टू इट इज क्या है? इट इज अ व्हाट? अ प्रोसेस बाय विच any organism is grouped into convenient categories. टैक्सोनॉमी का मेन बेसिस 3 फीचर क्या क्या है? कि किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको नाम देना, फिर नाम देने के बाद क्या, उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से पर्टिकुलर किसी ग्रुप में रखना या कैटेगराइज करना. These 3 are basic points or features of taxonomy. Okay, have you understood? Yes, sir. Okay. Now in these 3 domains of life we will study in brief in the next chapter, but here it's just a part of classification. Classification includes what? 3 domains. 3 domains are archaea, bacteria and eukarya. Archaea is what? They contain single cellular organisms, which is archaebacteria. They are protoplasmic, they are prokaryotic, and they have single cell organisms. Archaea contains only one kind of kingdom, that is archaebacteria. Archaebacteria is more primitive than bacteria. Okay. Now bacteria contains what? Simple prokaryotic organism, and they also contain some single kingdom eubacteria. See, they have single kingdom what? Archaebacteria, which is more primitive to what? Eubacteria or bacteria, and bacteria contains a single kingdom eubacteria. And eukarya, they are what? Eukaryotic organisms, which are included in 4 kingdoms, which have प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ अभी हम लोग डीपली ब्रीफली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. सिंपल क्लासिफिकेशन है कि हम लोग जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे उसको कैसे डिवाइड किए हैं. एवरी लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ आर डिवाइडेड इनटू दीज 3 डोमेन्स. व्हिच आर दीज 3 डोमेन्स? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया. आर्किया इज व्हाट? इट कंटेन सिंगल किंगडम आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत प्रिमिटिव और प्रोकैरियोटिक हैं. ये बैक्टीरिया से पहले भी हैं, मतलब दे आर मोर प्रिमिटिव देन बैक्टीरिया. सेकेंड वन इज व्हाट डोमेन? बैक्टीरिया. दे आर कंटेन सिंगल सेलुलर बैक्टीरियल सेल्स, which is the kingdom Eubacteria. And now third is Eukarya, who contain 4 kingdoms: Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Understood? Yes, sir. Okay. Coming to the nomenclature. Nomenclature is most important, how we write or how we name an organisms. First of all, definition we have studied. Tell me the definition, Sana. It is a system of naming the known and living organisms that they are known by the same name all over the world. Yes. Simply you can say nomenclature is naming. Nomenclature means naming. It is related to naming. Naming of what? Organism. जितने भी organisms अर्थ पे प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर में किस तरह से एक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, उनको नाम देंगे, उसको हम लोग नॉमेनक्लेचर में लाएंगे. नाउ 2 प्रोसेसेस आर देयर फॉर नेमिंग. 2 प्रोसेस. कौन कौन से वो 2 प्रोसेस हैं? वर्नाकुलर नेम या वर्नाक्युलर नेम. वर्नाकुलर नेम इज व्हाट? कॉमन नेम. कॉमन नेम लाइक कि हर एक चीज को हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. अग्री और नॉट? तो उसको हम लोग किस में लेते हैं? कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम में. सेकंड इज साइंटिफिक नेम. साइंटिफिक नेम इज व्हाट? A single name will be called all over the world. For example, if we take maybe we take onion, तो अनियन को ही एक ही चीज को कई लोग प्याज बोलते हैं, कई लोग कांदा बोलते हैं, एंड बहुत जगह जगह वो कंदिया भी बोला जाता है. तो दैट स्पेसिफिक नेम अगर हम लोग यही वर्नाकुलर नेम किसी और कंट्री में या कहीं भी जाके बोलेंगे प्याज, they will not be able to understand because they have some other name of that onion. Okay, so for clear specification of what or about what species, किस स्पीशीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी क्लियर स्पेसिफिकेशन के लिए we use scientific name. Okay, scientific name is used all over the world. All over the world. And vernacular name या local name are used by local states, local people living in that particular area. Now common name, these are local names given to an organism in particular area. पहले ही बता चुके हैं. Several names of a single organisms. एक ही
चीज के या एक ही ऑर्गेनिजम्स के कई सारे नाम हो सकते हैं, जैसे रोज, गुलाब, गुलाब, राजको, अलग अलग जगह पे गुलाब को किसी किसी नाम से बुलाया जाता है, वो लिखा है। ठीक, इसलिए सारी वर्ल्ड या पूरे वर्ल्ड के लोग एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से बुलाएं। फॉर दैट पर्पस वी हैव द साइंटिस्ट हैज क्रिएटेड द साइंटिफिक नेम, एंड साइंटिफिक नेम इज व्हाट recognized by a department. That department name is ICBN. ICBN क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है एंड इट मेक श्योर कि नो अदर नेम इज गिवन टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर एक नेम किसी एक ऑर्गेनिज्म को दे चुके हैं तो वो नेम किसी और ऑर्गेनिज्म के पास ना जाए। तो मेक अश्योरिटी वी ICBN मेक अश्योरिटी कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम एक ही रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ICBN का फुल फॉर्म डू यू नो सना? International Code of Botanical Nomenclature. ICBN is for it is for plants, same as ICZN. ICZN would be International Code for Z. What does Z stand for? Zoological nomenclature. Yes, zoological nomenclature. So ये दोनों मेक श्योर करते हैं कि एक ही नाम एक ही ऑर्गेनिज्म को दिया जाए और वो नाम कहीं भी पूरे दुनिया में किसी और ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए। They make sure of this. So these department make rule and regulation. They have given the rule and regulation. They have passed it, and based on these rule and regulation, every single scientist follow. And whenever they discover a new organism, they follow these rules, and according to that rule, a new organism's naming is done. Before that, बहुत सारे लोगों ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंगक्लेचर है, ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंगक्लेचर है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म पहले लोग के मतलब what is in old days people were used to do they used to do anyway naming according to their way. Every scientist all over the world, whatever the name they think it is suitable after their name or after their place of discovery, they used to give that kind of name. So Carolus Linnaeus, again the scientist, he gave binomial system of nomenclature. He was the first to propose something systematic kind of things, which proposed binomial nomenclature. Understood, Sana? Carolus Linnaeus proposed binomial nomenclature where? In his book Philosophica Botanica. He has written a book, Philosophica Botanica. This one is an important point. You have to remember this book name, where he has written the binomial nomenclature and process. Binomial nomenclature means what? Binomial. Bi means what? Two, and nomial means name. Yes. So binomial nomenclature means what? Two naming system. Whenever we will rename or name an organism, we will use two systems, two names. One will be what? One will be generic name, means उसके genera को देखेंगे, generic name. The second we will use specific epithet, means what is the species name. Okay. Whenever we will nomenclate any organism, we will follow binomial nomenclature. And binomial nomenclature says what? कि कोई भी नेमिंग का सिस्टम हो वो दो नाम से ही बनेगा, एक जिसमें से जेनेरिक नेम होना चाहिए एंड द सेकंड शुड बी स्पेसिफिक एपिथेट, मींस स्पीशीज का नाम. ओके. लीनियस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बिकॉज इन्होंने ही वास्ट वैरायटी में या कह लो ब्रॉड टर्म में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया था बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का. बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल उस टाइम पे जो थे उन्होंने उनमें से कई सारे प्लांट एंड एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करके बाइनोमियल सिस्टम के थ्रू दिखाया था. दैट इज व्हाई बाइनोमियल सिस्टम इज स्टिल अप्रूव्ड एंड स्टिल यूज्ड ड्यूरिंग दिस डेज. ओके. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? सेम एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, प्रोवाइडिंग स्पेशल नेम. स्पेशल नेम मींस क्या? एक नाम क्या रहेगा? जेनेरिक एपिथेट, जेनेरिक नेम रहेगा एंड द सेकंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट. Okay, these two will combine and make the name of an organism. Here we can see the examples like plants. Mein pea is the famous one. Many times it has been asked also, what is the scientific name? Pisum sativum. Pisum sativum. Pisum here is what? It is generic name. It is generic name. And sativum is what? Specific epithet. Okay. Yes, sir. Yeah. Likewise, बहुत सारे plants and animals के दिए हुए हैं. Animals we can see humans. Humans what? Homo sapiens. Homo is what? Generic name. Sapien is what? Specific epithet. Okay. Let me give you an example. Okay. इसमें you tell Sana what is generic name and what is specific epithet. It is a name carrot. Generic name. Yeah. Generic name. And sativus is specific epithet. Yes. Generic name is Raphinus and sativus is what? Specific epithet. It is generic name.
Understood how we nomenclate the binomial nomenclature कैसे use होता है? Okay. Now next, what are the rule for binomial nomenclature? हम लोग कैसे binomial nomenclature को use करते हैं, क्या क्या rule हैं? We will study now. Many organisms can have single generic name, but the specific epithet should be different. Now what the first rule is saying कि एक organism, an organism कोई भी हो, organism can have same generic name, means they can have generic name same. Why? Because genera is composed of species. Later we will study here in this chapter only. Genera is what? Composed of species या combination of species. So जितने भी एक similar species हैं वो combine होकर genera बनाते हैं. तो genera क्या हो सकता है? Common हो सकता है. And genera being genera common, it can have same generic name. An organism, yet two or more organisms can have same generic name. Same example: Solanum tuberosum, Solanum melongena, Solanum nigra. See, they are all different, but they have same generic name. Tuberosum is species different, melongena different species, nigrum different species. Means different specific epithet is used, but they have used same generic name. This is the rule of binomial nomenclature कि generic name same हो सकता है, but they should have different species name या specific epithet जो हम लोग last में use करते हैं, that should be different. Okay? Yes, sir. Next one is here I've already told you International Code of Botanical Nomenclature. इन्होंने ही रूल प्रोवाइड किया है फॉर कैसे बाइनोमियल सिस्टम हम लोग कैसे नेमिंग कर सकते हैं. द नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. सी जितने भी साइंटिफिक नेम यू विल सी दे आर रिटन इन लैटिन. सॉरी, दे आर इन लैटिन, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन. लैटिन से क्यों डिराइव्ड होते हैं? नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन. व्हाई? जितने भी नेम होंगे वो लैटिन वर्ड से ही डिराइव्ड होते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज. डेड language. Dead language can mean dead languages are those languages where we cannot find any change in their speaking or writing over thousands of years. उसको हम लोग बोलते हैं डेड लैंग्वेज. मीन्स कि उसमें कोई चांस ही नहीं है कि ये लैंग्वेज बदलेगा. इसीलिए लैटिन से डिराइव्ड लेके नेमिंग करते हैं. क्यों? क्योंकि लैटिन से जो भी नेमिंग डिराइव्ड होके लिया जाएगा वो बदलेगा ही नहीं. इट विल कंटिन्यू टू बी द सेम थ्रू आउट hundreds of years. Understood है ना? इसीलिए हम लोग क्या है, मतलब जो साइंटिस्ट है इसीलिए उन्होंने रूल दिया है कि जितने भी नेम हैं ऑर्गेनिजम्स के वो लोग कहाँ से डिराइव होंगे? लैटिन वर्ड से डिराइव होंगे, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होंगे. एंड जब भी वो लोग लिखे जाएंगे किसमें लिखे जाएंगे? इटैलिक्स में लिखे जाएंगे. ओके, इटैलिक्स में मीन्स कि जब भी टाइप्ड होंगे तभी इटैलिक्स में होगा. रिटन हैंड में अभी अगला रूल भी आएगा, इसमें रिटन में कैसे होगा. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. कहीं से भी originate हुआ है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, but they will be using the Latinized form of the word. Now, the second rule is what? The first word in a biological name represents the genus, while the second name, competent, denotes the specific epithet. Already told you, Homo sapiens. Out of this first name will what represent? Genera, and second name will represent specific epithet. Understood? These are the rules of writing. How we write an organism name in scientific way. Excuse me, ma'am. Vivan, you are in bio class. Sir is waiting for you in math class. Okay. The third one is both the words in a biological name, when handwritten, they are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. Now, when we write in copy or somewhere, whenever we write the name, we separately underline them. It is compulsory that you underline any scientific name. Okay? Whenever you are writing any scientific name in copy, in book, or wherever you are writing, it should be underlined separately. Why? Because it is a rule of scientific nomenclature. Okay? Sorry, binomial nomenclature. Okay. Yes. And when they are typed in, wherever they are typed in italics. Why? They are typed in italics to show their Latin origin. Next one is the first word denoting the genus. It starts with a capital letter. See, here two examples I have written now. The genera is starting with what? Capital letter. Genera is starting with capital letter. Here also, here also. So it is a rule. Whenever we are writing, we will write the generic name with capital letter and specific epithet will be small letter. Here, generic name is starting with capital letter, specific epithet is starting with small letters. The next rule, we have studied fourth one.
Yeah, fifth one. Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of biological name, and is written in an abbreviated form. Okay. For example, here they have taken Mangifera indica Lin. See, Lin is not written in latex or italics formation. It is just written in abbreviated form. Lin denotes what? Linnaeus. We generally don't use the scientist name who has discovered the particular organism or particular species. But whenever we are writing in need, we will write their abbreviation in small, and we will not use any Latin form or underline form. We will simply write their name in abbreviated form. Okay, like if we are writing Mangifera indica, we will simply write Lin. Abbreviation means Linnaeus abbreviation Lin, and we will simply write it. We will not underline it, we will not Latinize it when typing. Okay. Yes, ma'am. Next, when a species is transferred or revised, then the name of original worker is retained, but in parentheses. Example, Schizium cumini. See, whenever a species means it has formed, any scientist in some new characters and which is not matching to the category where it is belonging right now, and it has to be transferred from one category to another category or another classification. So whenever we are transferring or revising them, their naming, we use the original worker name, that is Lin, and it stands for what? Linnaeus only. We use their names in what? Bracketed form, but in parentheses. Parentheses not in bracketed form. Okay, their name will not be removed. Their name will be there, but in bracket form. Next one is no names are recognized prior to those used by Linnaeus in 1753. This is not very important point that 1753 where he has used his binomial nomenclature. He has written his book Species Plantarum. इससे पहले कोई भी जो नेम्स हैं जो बनाए गए थे साइंटिस्ट के बाद में साइंटिस्ट के जरिए जिन्होंने नेमिंग किया था, वो नेमिंग नहीं माना जाएगा. 1753 से पहले जितने भी साइंटिस्ट ने प्लांट एंड एनिमल्स की नेमिंग की थी, दैट नेमिंग विल नॉट बी वैलिड हियर. ओके, जेनेरिक एंड कॉमन नेम्स में बी सेम. गोरिल्ला गोरिल्ला. सी, ये जेनेरिक एंड कॉमन नेम सेम हो सकते हैं, बट एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन इज व्हाट? प्लांट्स में कॉमन नहीं हो सकते. प्लांट्स कांट हैव सेम जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट नेम. जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट एनिमल्स में कॉमन हो सकते हैं, लाइक गोरिल्ला गोरिल्ला, नाजा नाजा. दे कैन हैव कॉमन generic name and specific epithet name, but the plants can't have common generic name and specific epithet name. The last one is what? The name of categories higher than the rank of genus are not printed in italics. Bold letters can however be used. अब categories के names means कि जितने भी genus, एक particular genus के अगर हम बात करें, और इसी genus में जितनी भी categories हैं, जितनी भी categories या rank हैं, categories और rank, उनको हम लोग क्या करेंगे? इटैलिक्स में नहीं प्रिंट करेंगे. हाउएवर हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको बोल्ड लेटर में शो कर सकते हैं. वी विल राइट देयर कैटेगरी इन अ सिंपल वर्ड. उनको इटैलिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है. हाउएवर हम लोग उस कैटेगरी या रैंक को बोल्ड लेटर में शो कर सकते हैं. ओके, these are the few rules that were given by Carolus Linnaeus and recognized by ICBN for writing or nomenclating any organism. कोई डाउट है सना इन पूरे पॉइंट्स में? No, no. अंडरस्टूड? Yes. Okay. Now, see, one most important point is that you have to remember every name. Remember, okay. You have to learn, not remember. You have to learn every name. Because exams में बहुत बारी पूछे जाते हैं. जितने भी scientific names हैं, most important names like pea, human, housefly, mango, wheat, lion. There are thousands of organisms, but most important these 14-15 organisms are there जिनका तुम्हें scientific name याद रखना ही रखना है. Means you have to learn by heart. Wherever you go and walk, you just name them. That yes, by looking at your Almira, just name it. I will call that Almira by Pisum sativum. Whenever you see the Almira, you'll call just Pisum sativum. This is a trick to remember scientific name. Okay. You have to learn the scientific name and it will be very useful in future. And अभी तो ये बहुत कम है इस चैप्टर में, but even you will see study the morphological characters. Whole 9 to 10 points are there. 9 to 10 points are there. 9 to 10 chapters where you have to learn 70 to 80 names. So please try to remember as much as you can. And there are 14 to 15 in this chapter, which I think you should learn. Okay? So now there is no shortcut, no trick. But you have to learn by heart. Like P का Pisum sativum, human का Homo sapiens,
मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, लायन का पैंथेरा लियो. Same like you have to learn everything. You have to learn these scientific name. Okay, and T is most important because इसका आ भी चुका है scientific name NEET में भी. Okay. Yes, sir. Yes. Now we come to the next point, taxonomy. Already we have studied the definition. Taxonomy क्या है? Principle and procedures हैं. Carolus Linnaeus, father of taxonomy. Just give me a minute, Sana. Okay. Where were we? Taxonomy. Okay. On the basis of taxonomical study, पहले ही मैंने हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एनाटॉमिकल कहते हैं, सारी चीजों को देख के जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी. फिर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, वी डिवाइड टैक्सोनॉमी कैटेगरी या हायरार्की. हायरार्की मींस लेवल्स या स्टेप्स, जिसमें एक कैटेगरी को दूसरे कैटेगरी में हम लोग मतलब आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में रख सकते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. नाउ व्हाट इज अ टैक्सॉन? टैक्सॉन और टैक्सा, टैक्सॉन और टैक्सा. टैक्सॉन और टैक्सा इज व्हाट कि कोई भी एक कैटेगरी में हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर कैटेगरी मींस कि एक कैटेगरी तो होती नहीं किसी भी क्लासिफिकेशन में, कई सारी कैटेगरीज होती हैं. तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को रखे हुए हैं, वन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ टैक्सा. टैक्सा और टैक्सॉन. अंडरस्टूड? कोई भी एक कैटेगरी या एक रिप्रेजेंटेशन या एक जगह कि हाँ इनका रैंक या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का रैंक और कैटेगरी यही है, दैट इज क्लासिफिकेशन, दैट प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको क्या कहते हैं? दैट यूनिट टैक्सा और टैक्सॉन. टैक्सा और टैक्सॉन यू कैन से यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इट इज व्हाट? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. व्हाई वी आर सेइंग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म. That is why it is unit of classification. Okay. Now taxonomic hierarchy. Hierarchy means level. What are taxonomic levels? It is system of arranging taxonomic hierarchy in descending order. Descending orders means what? From higher to lower. Higher organisms to lower organisms. We will look forward and बहुत सारे organisms के differences को देखते हुए धीरे we will come to the point of most closely related organism, and that is what we call taxonomic category. For plant and animal, it is different. See, for plant, it is what? Kingdom, division, class, order, family, genus, species. Division and phylum. It is different for plant and animal. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. You have to learn this. And in plants, this phylum is what? Division. You have to learn this. How you will learn this? It's a trick. Kids prefer cheese over fried green spinach. It's a trick. If you will learn this phrase, you will be able to learn the categories. What are the categories? Kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Now, whenever we will move from upward to downward, we will see similarity increases. Similarity increases. And same, we will move from species to kingdom. Similarity what? Decreases. Similarity decreases. क्यों? क्योंकि जब भी स्पीशीज की तरफ जाएंगे, किंगडम से लेके स्पीशीज की तरफ, वी विल सी मोर कॉमन कैरेक्टर्स. एंड सेम वे इधर भी जब भी हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, वी विल फाइंड लेस कॉमन कैरेक्टर्स. ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऐसे ऑर्गेनाइज की गई है कि जब भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करेंगे, दैट इज फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, नंबर ऑफ सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में जितने सारे डिविजन्स हैं, उन डिवीजन स्पीशीज और किंगडम के बीच की बात करें तो स्पीशीज में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं एंड किंगडम में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें क्या रहेगा? रिलेशन बहुत कम रहेगा. बट एट द सेम टाइम इफ वी टॉक अबाउट ओनली स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के अंदर बात करें तो दे विल हैव मोर कॉमन कैरेक्टर, और वी कैन से दे आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म. ओके. Yes, ma'am. Okay. All the members of taxonomic categories have similarities which are different than those of others. Maximum similarity is found in the species which is the lowest taxonomic category. The similarity decreases as I have already told you. Similarity कहाँ decrease होती है? जब हम लोग species से kingdom की तरफ बढ़ेंगे तो similarity कम होगी, और at the same time जब kingdom से species की तरफ move करेंगे तो similarity बढ़ेगी. And you have to learn these names: kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. You have to learn. I have given you a slang, or you can say a phrase to learn how you can learn this. Okay. Now we can see an example of species. We can say category radish. Taking example of radish. Radish का
we will see how it is being classified. Radish का kingdom क्या होगा? Plant है. This plant, plantae. It's the division because in plants we use division instead of phylum. Division is these all things you have to learn. However, it does not ask in many of the exams. It only 2 or 3. If you are learning, it will be helpful. Division, it would be spermatophyta. When we will learn in a few of the chapters and next chapters what is spermatophyta, what are their characteristics, what are dicotyledons, what are brassicaceae. These all will be covered in further few chapters, which is after this chapter. Okay. Division is what? Spermatophyta. Spermatophyta. Class is dicotyledon. Dicotyledon. Order. Their order is Periatales. Kingdom, phylum, class, order, family. Family is Brassicaceae. They belong to the family of Brassicaceae. Spell S-E-A-E. Brassicaceae. Kingdom, phylum, family. Genus and species. Genus is Raphanus. See, we have studied अभी carrot का Statilis. Okay. Carrot का भी हमने देखा था Raphanus, and radish is also called Raphanus. Sorry. Okay. Now this is example we can study that how kingdom, phylum, class, order is used in nomenclature, or we can say used in taxonomic category. How we can categorize this each category. Okay, this each category represent one taxa or taxon. This is the process of identifying any organism. If we are talking about any organism like cat, dog, human, plant, any plant like mango tree, people tree, banyan tree, anything, any living organisms we are talking about in known existence, we will classify them in this series. We will classify what is their species name, what is their generic name, what is their family name, what is their order, what is their class, in which division they are belonging, and in which kingdom they are. Okay, understood, Sana? Yes, ma'am. Okay, I think that's all for today. And try to learn. First of all, this is most important. You have to learn it. Most importantly, you have to learn this. The series, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. You have to learn this. I'll ask in the next class. And the second is you have to learn 14 or 15 scientific name. Okay? Next class, next Thursday. Yes, next class, next Thursday. Okay, Sana? Yes, ma'am. Okay, now I'm going to stop sharing the screen.